welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों शाहरुख खान छुपा रहे थे अपना चेहरा? किच्चा सुदीप ने किया रिएक्ट ऑन हिज डिबेट विद अजय देवगन. शिल्पा शेट्टी ने हिलेरियसली ट्रोल किया करण कुंद्रा को. शाहरुख खान क्यों कैमरा से खुद को कर रहे हैं हाइड? डंकी में शाहरुख खान एक खास तरह के लुक में आएंगे नजर. शाहरुख खान की अम्ब्रेला से फेस कवर करने की क्या वजह है? शाहरुख खान लाख कोशिशों के बावजूद हुए कैमरास में कैप्चर. आखिर क्यों शाहरुख खान पापराजी के कैमरास के साथ प्ले कर रहे थे हाइड एंड सीक? वैसे तो किंग खान को जब भी शटर बग्स में कैप्चर किया जाता है वो हमेशा स्माइल करते हुए ही पोज करते हैं. लेकिन रिसेंटली शाहरुख खान को जब मुंबई के एक डबिंग स्टूडियो से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया तो यहाँ उन्होंने पूरी कोशिश की किसी भी मीडिया कैमरास में उनकी ग्लिम्स ना दिखे. आप देख भी सकते हैं कैसे पहले तो उनके स्टूडियो से बाहर आते ही मीडिया कैमरास को हटाया जाने लगा, लेकिन फिर जब कैमरास ने रिकॉर्डिंग नहीं बंद की तो शाहरुख खान ने खुद ही ब्लैक कलर के इस अम्ब्रेला से अपना फेस कवर कर लिया और कार में बैठने तक उन्होंने अम्ब्रेला से अपना फेस हाइड करने की पूरी कोशिश की. हालांकि वो फिर भी ऐसा करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए क्योंकि पैप्स ने अपने कैमरास में उनके ग्लिम्स को कैप्चर कर लिया. अब सवाल ये है कि आखिर शाहरुख खान कैमरा से खुद को इतना छुपा क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब है राजकुमार हिरानी की डंकी के लिए लिया गया उनका लुक. दरअसल शाहरुख खान इन दिनों डंकी की शूटिंग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक खास तरह का लुक स्पॉट किया है. बता दें फिल्म में शाहरुख खान के लुक के लिए एक स्पेशल विग भी डिजाइन करवाई गई है. ऐसे में अब शाहरुख खान नहीं चाहते कि फिल्म का उनका लुक सामने आए और यही वजह है वो कैमरास पर नजर आने से इतना बच रहे हैं. वैसे बता दें कि शाहरुख खान ने डंकी के अपने स्पेशल लुक के चलते ही सलमान खान की टाइगर 3 की शूटिंग जिसे वो जून में शुरू करने वाले थे वो कुछ महीनों के लिए डिले कर दी है. तो अब आप समझ ही सकते हैं कि शाहरुख खान किसी भी कीमत पर डंकी का अपना लुक फिल्म के रिलीज से पहले रिवील नहीं करना चाहते हैं. दो कैमरास में उनके लुक की एक छोटी सी झलक दिख गई है एंड मस्ट से कि व्हाइट में किंग खान और भी डैशिंग लग रहे थे. किच्चा सुदीप ने अजय देवगन के साथ अपनी ट्विटर वॉर को किया जस्टिफाई. किच्चा सुदीप ने कहा वो किसी को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे. अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच हिंदी लैंग्वेज को लेकर शुरू हुई थी वॉर. अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच हुई ट्विटर वॉर पर अब कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप ने किया रिएक्ट. बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के साथ नेशनल लैंग्वेज हिंदी को लेकर शुरू हुई स्पैट पर किच्चा सुदीप ने दिया अपना क्लैरिफिकेशन. दरअसल पिछले दिनों नेशनल लैंग्वेज हिंदी को लेकर किच्चा सुदीप ने ट्विटर पर कमेंट करते हुए लिखा था हिंदी इज नो मोर अ नेशनल लैंग्वेज, जिस पर अजय देवगन थोड़ा नाराज हो गए थे और उन्होंने ट्विटर पर ही किच्चा सुदीप को जवाब देते हुए कमेंट किया, किच्चा सुदीप, माय ब्रदर, according to you, if Hindi is not a national language, then why do you release your native language, mother tongue films by dubbing them in Hindi? Hindi was, is and always will be a mother tongue and national language. जन गण मन. ऐसे में हिंदी को लेकर
ट्विटर पर दोनों एक्टर्स के बीच वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गई, जिसमें कई बॉलीवुड एक्टर्स भी कूद पड़े और साथ ही साथ इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बना लिया है और इस पर अच्छा खासा डिबेट होने लगा। लेकिन अब हिंदी बीइंग अ नेशनल लैंग्वेज को लेकर अजय देवगन के साथ शुरू हुई इस वॉर पर खुद किच्चा सुदीप ने खुलकर बात की और एक न्यूज पोर्टल को दिए अपने इंटरव्यू में हिंदी इज नो मोर अ नेशनल लैंग्वेज वाले अपने ट्वीट के पीछे का इंटेंशन क्लियर किया। The actor said, Ajay sir and me are two individuals who have seen the industry. He's seen more than me. We are grown-ups. We understand what is what. We were talking about black and white. And we didn't want to settle with the grey. A lot of people took the topic, but nobody tagged us. They just wanted the topic and they took it politically all over the place. And that is a zone where we both don't belong. किच्चा सुदीप ने यहाँ तक कहा कि हिंदी लैंग्वेज पर उन्होंने जो ट्वीट किया उसके जरिए वो किसी को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे। He had a question to me and I respected that and I wanted to answer. Though that came in Hindi, I understood Hindi, but I responded in English so that everybody understands what I was trying to say. Of course, Ajay sir got a different interpretation of the whole thing, but that's fair enough. But I also had to make a point. The point being that it wasn't about ego. If I wanted to provoke or be arrogant, I would have been arrogant from the first tweet. I didn't have to wait for my third one. But what would have happened if I had sent the text in Kannada? This is a very honest point, which I think even he respected. अब किच्चा सुदीप के इतने लंबे चौड़े क्लैरिफिकेशन के बाद we hope कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सबको समझ आ गया होगा। वैसे आपको बता दें कि किच्चा सुदीप ने हिंदी को लेकर ये कमेंट पैन इंडिया फिल्म्स RRR और KGF चैप्टर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद किया था, जिसने साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच भी डिफरेंसेस पैदा कर दिए थे। शिल्पा शेट्टी ने किया सबको निकम्मा। नीतू कपूर के साथ डांस करती दिखी शिल्पा शेट्टी। क्या शिल्पा शेट्टी ने तेजस्वी प्रकाश को कहा नागिन? शिल्पा शेट्टी आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म निकम्मा को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। हाल ही में शिल्पा शेट्टी पहुंची नीतू कपूर के रियलिटी शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने। यहाँ शिल्पा शेट्टी ने शो के जजेस के साथ जमकर डांस किया और मस्ती भी की। यही नहीं, शो में शिल्पा शेट्टी की एंट्री भी काफी इंटरेस्टिंग रही। शो में शिल्पा शेट्टी ने एंट्री की लेट एक्टर श्रीदेवी के आइकॉनिक सॉन्ग मैं नागिन तू सपेरा पर। ऐसे में शिल्पा शेट्टी ने इस सॉन्ग को चूज करने की वजह भी बताई। शिल्पा शेट्टी की इस दमदार एंट्री पर करण कुंद्रा, द होस्ट ऑफ द शो, सेड, बोलती बंद करवा दी मैम आपने तो। नीतू कपूर further asked Karan Kundrra that he must have loved Shilpa Shetty's entry, to which the host added, बोल तो रहा हूँ मैम, दुनिया खत्म। ऐसे में शिल्पा शेट्टी भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं। शिल्पा शेट्टी ने इस पर जवाब देते हुए कहा, मुझे लगा इस गाने पर एंट्री करना सेंस बनता है क्योंकि नागिन को ज्यादा पसंद करते हैं आप आजकल। Karan Kundrra ended up blushing while the audience breaks into laughter. आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी की सिस्टर शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा और उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस में साथ थे। ऐसे में बोथ तेजस्वी प्रकाश एंड शमिता शेट्टी didn't see eye to eye as they had major fights and disagreements. वहीं करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं, तो शिल्पा शेट्टी का इशारा कहाँ है ये समझा जा सकता है। जॉनी डेप और उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड के बीच चल रहे डेफेमेशन केस का फैसला आ गया है, जिसमें जॉनी डेप की जीत हुई है और जॉनी डेप की इस विक्ट्री पर कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ने भी अपना सपोर्ट दिखाया है। इसमें दिशा पाटनी भी शामिल हैं, जिन्होंने जॉनी डेप के फेमस कैप्टन जैक स्पैरो अवतार की पिक्चर अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, नोबडी कैन एवर रिप्लेस यू। इसके अलावा अली फजल और श्रुति हासन जैसे स्टार्स ने भी अपने इंस्टा स्टोरीज के थ्रू जॉनी डेप को कंग्रेचुलेट किया है।
बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर केके की ट्यूसडे को कार्डियक अरेस्ट के चलते डिमाइस हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनकी बॉडी की ऑटोप्सी की, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर केके को टाइम पर सीपीआर दे दिया गया होता तो शायद उनकी जान बच जाती। बता दें केके कोलकाता में एक कॉन्सर्ट अटेंड करने गए थे और उसी के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद ऑडिटोरियम से बाहर निकलते वक्त ही केके का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उनके चेहरे से उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नोरा फतेही अपने इस लेटेस्ट वीडियो में अपनी हॉटनेस से टेम्परेचर को और बढ़ा रही हैं। नोरा फतेही का ये लुक उनके रियलिटी शो की शूट के लिए है, जिसमें वो ब्लू वेलवेट गाउन में काफी स्टनिंग दिख रही हैं। शाहरुख खान जल्द ही एटली की फिल्म में नयनतारा के साथ दिखाई देंगे। अब इस मच अवेटेड फिल्म को जवान टाइटल दिया गया है। एक सोर्स ने रिवील करते हुए बताया कि द फिल्म इज टाइटल जवान एंड द अनाउंसमेंट विल बी मेड सून बाय रिलीजिंग अ टीजर व्हिच इज अबाउट 1 minute 34 seconds long. बता दें, while Nayanthara will be seen as an investigating officer, Shah Rukh Khan will reportedly be seen in a double role in the film. Recently, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और एस राजामौली के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करते विशाखापट्टनम में स्पॉट किए गए थे और अब एस राजामौली ने बताया कि अयान मुखर्जी ने अब तक उन्हें ये फिल्म नहीं दिखाई है। He said he has prepared a blockbuster film, but still I have a complaint against him. I came to Mumbai twice after the release of RRR, but Ayan did not show the film to me. But he showed the entire film to my father. He laughed. I'm quite upset with him. बता दें, एस फिल्म मेकर एस राजामौली is presenting ब्रह्मास्त्र in Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam to help the film crack the South market. Coming up on the show, दिया मिर्जा and श्रेया धनवंतरे ने किया Zoom के साथ exclusively interact. Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me two talented and gorgeous ladies. Please join me in welcoming Diya Mirza and Shreya Dhanwanthary. Hello ladies, welcome. Hi Parul, thank you for having us. So I'll start off by saying the trailer of Grey was pretty intense in all the right ways. So kudos on that one. I'd like to know from both of you, firstly, your stance on sexual consent and that gray area that the trailer seems to touch upon. Like, is it black and white for you both, or would you feel inclined to give the other person the benefit of the doubt? Like, where do you stand on this? For me personally, it's black and white. I don't think there's any gray, as I hope it should be with consent for anyone. The gray is what is created by societal pressure, cultural inadequacies, ignorance, apathy, and so on. I love the title of our film, by the way. I think it's the color gray, but it's kind of, it shines the light, so it has a sense of it gives you a better sense of what it means to have consent or to give consent, and what really consent means. And I think it's a very simple story that will help many people understand what it truly stands for, what consent truly stands for. I agree. I think the title is actually very, very clever. Like, I had that's a good one kind of moment when it kind of dawned upon me. Shreya, what about you? It didn't dawn upon Shreya until today, by the way. Really? I really thought it was just the difference between American and British spelling. Like, realize is Z in, you know. What about you, Shreya? What's your personal stance? They are lying to all the people calling me intelligent. See, this is what happens in my brain. Nothing. No, I agree with Diya completely. I think consent is it's a black and white concept. I think human beings, with their lack of understanding or with their conditioning with how society functions, are sort of operate in the gray area only because they don't know any better, and they can ask the tougher questions and they get the tools to handle it. But yeah, it's absolutely a black and white concept. What was very interesting to me within the construct of this narrative is something that I think all of us struggle with, which is understanding boundaries with people we love and respect. Yeah. That is something novel. You know, when a stranger behaves badly with you or disrespects your space, you respond to that very differently than when somebody who is well known to you, somebody you care for, does the same.
And I think that is a conversation that we haven't had. That is a conversation that's really necessary. That is a conversation that needs the spotlight, and I'm glad we're doing it. I agree, because that's when it actually gets a little blurry, and that's when like human emotions sort of come into play. So that's very true. Would any of you have, I mean, I hope not, but like, is there any personal experience with the overlining arc of the story? Oh, absolutely. Isn't every woman you've met in your life going to respond with affirmative to that? I mean, I can't think of any woman I've interacted with or known to not have experienced this at some level or the other. Yeah, I would hate to say this, but I'd be very surprised if a woman answered in the negative for this question. Yeah. Right. Talking a little bit about your personal journeys, Dia, correct me if I'm wrong. I've observed this about you over the last couple of years. You seem to have happily detached yourself from the rat race and seem to be extremely content doing the things you like at your own pace in your own way. When do you think that change sort of happened within you, and what do you feel like was the driving factor behind it? Hell yeah. I got it right. Oh my God, so right. The day I realized that I don't have to be a part of the rat race. Who decided that for me? I mean, I didn't, for sure. I suddenly found myself in the midst of it, and I was like, this is not even who I am. I wasn't raised to be this person. I wasn't, my upbringing doesn't allow me to do this. I don't understand it. If anything, it terrifies me. It baffles me. It confuses me, and it's making me unwell. And I love my work. I love the medium of storytelling. I think it's so powerful. It's so wonderful. And until I'm at peace with myself, I'm not going to be able to tell the stories I want to tell. Sure. And I think the day I realized that was when a lot shifted. And I was actually saying this in a previous interview, Parul. But if you had told me 15 years ago that I would be doing some of my most powerful work at the age of 40, I wouldn't have believed you. Yeah. I mean, the way that things are, I guess, that tracks. And I think what brings that change is the reset, the change that we need to bring within ourselves. As women, we need to stop perceiving ourselves through the lens that the world perceives us. Sure. And we just need to keep driving and doing what we have to. I mean, at 26, if I set up a production company and I was told that the day you do this, it'll end your film career as an actor, I said, no problem. I want to tell stories. And if people suddenly decide not to cast me anymore because I'm a producer, that's their problem. I'll make my own films. But there are too many aspects of conditioning that I think when the younger me allowed myself to be driven by, and then at some point I kind of broke away from it and said, I have no fear of failing anymore. It does not bother me one bit. I am secure within my own space. I know I can deliver the goods when presented the opportunity. And if the opportunity doesn't present itself to me, I will create it for myself. Right on. That's fab. That's fab. Do you remember there being like a definitive moment where that switch sort of happened for you? Any particular instance or any particular sort of point I got where thrown out of a very big film that I was signed for. Okay. With a huge star. Basically, the huge star decided that another leading lady should be cast in the part. And it broke my heart. It shattered my confidence. It really it impacted me at many levels, and it made me sink. And I think it was just my spirit of survival that helped me realize that this is no way to move forward. I can't allow these people to determine my worth. I have to do it for myself. So funny, stars making casting decisions. Like the director was there for like chilling. Yeah. It's bonus that you're there, but I'm going to do all of the decision making. But that is what happens. I mean, we all know it. Even now, it is a very, very. I haven't seen it yet, but I'm saying this. Most of the stories I hear from the are like horrifying, like that. Like it's so sad. Yeah, really. Kudos to all the leading ladies and the women who worked in the industry making beautiful films and
telling beautiful stories and making people like me want to come into the industry. Just despite it all, I don't know how you did it, really. And It's that, better now. It's much better now. I think the younger generation is very non-interfering. Quite amazing. It's that's a true, Shreya. refreshing change. You've actually, you're working and thriving in a time where there is more method in the madness than perhaps. Yeah. That's it's. I don't know how you guys did it, really. So yeah, That's- dog, it's been an absolute pleasure. Good luck for everything ahead, and I hope to see you guys in person soon and do this again. Thank you, Parul. Thank you. Such a pleasure.